This is 244th module of financial management, and the discussion is on the theory of relevance of dividend. This is the second part of our discussion. In the first part of the theory of relevance of dividend, we discussed that there are many reasons why we say that the relevance of dividend exists. हमने इसमें वॉल्टर्स अप्रोच या उसका फॉर्मूला भी देखा था. Here we'll talk about another approach given by Gordon, and the Gordon says that basically shareholders are risk averse. Risk averse का मतलब है कि वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, and that is why आज जो उनको कैश मिल रहा है which is not risky, which is certain, वो उसको प्रेफर करते हैं उसके मुकाबले में कि जो उन्हें प्रॉफिट या रिटर्न या कैपिटल गेन आने वाले दिनों में मिल सकता है, that is expected return. So this certainty, because of being risk averse, this is what they prefer. Now Gordon says that investors being more of the nature that they would prefer today's return and the risk element which is uncertainty, so that is why they go with the present returns, and that is the current or present cash. Further, investors prefer even lesser amount today than a bigger amount tomorrow. यानी आज की अमाउंट अगर कम भी होगी बिकॉज वो ज़्यादा सर्टन है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, तो शेयर होल्डर्स कम अमाउंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं या प्रेफर करते हैं उसके मुकाबले में जो उसको फ्यूचर में उनको ज़्यादा मिल सकती है. इसी तरह गॉर्डन ये कहता है कि ड्यू टू द लेस रिस्की नेचर ऑफ डिविडेंड्स, इन्वेस्टर्स विल डिस्काउंट द फर्म्स डिविडेंड स्ट्रीम एट अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी कैश फ्लो को सिंगल अमाउंट हो या स्ट्रीम और एनिटी हो, अगर हम उसे लेसर डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आती है. दैट मीन्स वी गेट अ बिगर और अ ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू. So if because of the certainty they divide with a lesser rate of return that cash flow stream, so the value of firm actually increases and hence the dividend becomes relevant. So the Gordon's approach is based on certain assumptions that we need to keep in our mind. For example, the firms are all equity based, there is no leverage or debt. There is no external financing also, and it is only the retained earning, the profits which are kept in the business by the company. And then the internal rate of return of the firm remains constant. That means the efficiencies of the firm and the cost effectiveness are the same. Similarly, the cost of capital remains the same regardless of the risk complexion. And because we say that there is no external financing and external factors are constant, so ज़ाहिर है कि risk complexion भी तब्दील नहीं होगा. एक और बुनियादी assumption गॉर्डन के मॉडल की है जो और भी बहुत से मॉडल्स में हमने देखी कि कंपनी जो है, फर्म जो है वो गोइंग कंसर्न होगी, यानी उसके ना तो मुस्तकबिल करीब में बंद होने का इम्कान है और ना ही कोई इंटेंशन पाई जाती है. इन अकाउंटिंग वी कॉल इट सच अ फर्म एज अ गोइंग कंसर्न. And the retention ratio is also constant. That means if 50% dividend is paid and 50% is retained, then this ratio is also constant. And then another assumption, which is not a realistic one, that the corporate tax does not exist. Again, we can see that it needs to be considered. Now, Gordon gave this model of the growth rate of a firm and says that retention is something that determines the growth rate. यानी retention क्योंकि डिविडेंड पे आउट का ऑपोजिट होती है. हम ये बात देख चुके हैं कि अगर 60% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एज ए डिविडेंड, तो बाकी 40% जो होगा वो रिटेन्ड प्रॉफिट होगा या वो रिटेंशन होगी. तो 0.4 और 40% इज़ द रिटेंशन रेशो. तो जितनी रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगी. इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसे दूसरी तरीके से कहें तो डिविडेंड की परसेंटेज, डिविडेंड पे आउट की जो रेशो है वो अफेक्ट करेगी कंपनी की ग्रोथ के ऊपर एंड अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द फर्म. The growth rate of a firm is equal to the
retention ratio multiplied by the cost of the capital. And so you can symbolize it as G is equal to B into R, where B is the retention ratio and R is the cost of capital. Suppose a firm has retained 40% of its earned profit, that is the retention ratio, and the cost of capital, overall cost of capital of the firm is 15%, then we should expect 6% growth of the company. So summarizing this module of relevance of dividend, we can say that Gordon actually presented a formula, a method, an approach which says that the dividends are relevant, and the relevance is with reference to the growth of the firm, and this growth is dependent on how much is paid as dividend and how much is retained. More is retained by the firm, more is likely to be the growth of the firm. इस relevance theory की discussion को हम यहाँ से और आगे लेके अपने मॉड्यूल्स में चलेंगे और डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर मज़ीद डिस्कशन अपने अगले मॉड्यूल्स में जारी रखेंगे.